Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Today's topic is very important. Please pay close attention to this coin. It has a really good potential, and of course, in the current scenario when the markets are down today, exactly as I predicted. Go watch my videos. What's up? What's going up? And what is coming up for the Bitcoin and Ethereum and Cardano in near future? So this stream is both in English and Urdu language. So for Urdu language viewers, आप सबको खुश आमदेद और आपको इस स्ट्रीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है. प्लीज़ वॉच कीजिए इसको क्लोजली. इंग्लिश उर्दू दोनों में है ये स्ट्रीम. इसलिए आपको पता है मैं जब भी करता हूँ इंग्लिश उर्दू दोनों में, जब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही ख़ास नया कॉइन आपको इंट्रोड्यूस कराना है और जो कि आपको बहुत आगे फ़ायदा दे सकता है. और मार्केट्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करना है. मुस्तकबिल करीब में कहाँ जा रही हैं मार्केट्स, किस तरफ ट्रेंड कर रही हैं, तो इन सब के बारे में बात करते हैं. चलिए देखते हैं आज की स्ट्रीम. Okay, so first of all, I will complete my stream in English and then I'll switch over to Urdu. So right now markets are down, almost 5% down. Market cap is at $2 trillion. Bitcoin is down 4%. Ethereum is down 3.6%. I have been informing or telling you guys, and you can see Cardano is down 9% almost. So I've been informing you guys, I've been telling you guys that before cryptocurrency market or Bitcoin goes parabolic, it will definitely go high, much higher to their all-time highs. But before it happens, there will be a big correction coming, and it looks like that's we are seeing that correction right now. It's a healthy sign. It's not to be panicked. Something not to be panicked. Long-term holders, please hold your all your coins. Do not panic sell it, because when this market will turn back, nobody knows. But we can at least look at the charts and see some trends where it is going. And if you guys are interested in these kind of technical analysis, some and how accurately I've been telling you guys all these dips and bounce back, you can go watch my live streams. I'm not recording them later on or anything. I'm doing it daily on daily basis. Timestamps are there. You can go back all my videos and see how accurately I've been telling you guys that these dips are coming. Please save your profits, or the market is about to go up. So what's going on if we take a look at the charts right now, and this is 4-hour charts, Ethereum 4-hour charts. You can see that each candle is displaying 4-hour movement. So just recently we start coming back up, but pay close attention. These are not engulfing candles. The green ones are smaller candles than the red ones we just experienced from last night. So there are still chances that we can see more correction downwards, because of the RSI down here. It is still in the downward trend. What I mean by this, look at this. The RSI is continuously in the downward trend still. So, and it's a very obvious downward trend. So it can go further down if it's and this is a trend that I have been talking about, that it has been in the downtrend here as well, when people were feeling very bullish, and the fear and greed index was showing like 80 plus fear greed in the market, when it is going up and up and up, especially here. And especially here, I warn you guys that the trend is going down for RSI. So it can go really down, and if you would have saved your profits here, you must have saved a lot of money and avoided this correction. Now here, I'm not saying that the market will come back right away.
What I'm looking down here is that market can still go further down. This RSI, we need to see that it breaks out this trend and it start coming back up. Once that happens, then we can say yes, it is going up. And whenever it happens, when it's going to happen, nobody knows. But we can look at the trends and the news and everything, and we can say that safely that is going to be happening very soon. Maybe this little uptrend that we are seeing, maybe this is coming back right now. Here we have that feeling that okay, it's coming back right now, but then it start going down again. So it's holding this trend of downward trend very nicely right now. So it's still it can go further down from here. It might touch this line again and then go back further down, unless it crosses that 30 mark. We are not expecting it to come back. Most likely tomorrow on Friday, when the features and options expires towards the end of the month, after that we'll see that selling pressure will go off, because tomorrow for the Bitcoin, the target, the max pin price target is at $42,000. So it's still, if we can see where the Bitcoin is right now, is sitting around $47,000, and it dipped down to almost $46,000, 200 this morning, but it's still is very high, and there's a room that it can go further down, almost $4,000 to $5,000 more. So there, if it goes, Bitcoin goes down $4,000 more, then Ethereum will follow the suit, and it will go down as well. If we look at the Bitcoin chart, same thing. You see the same trend that I've been talking in RSI is a downward trend. You see this? So, my friends, this is not good. If you are looking at this downward trend in RSIs, all the technical analysts, they know that the prices will plunge further. They will go further down from here, and the target is right around here somewhere. Yeah, $42,000, right around here. Yes, this is the target. It can go that much down. It can go that much down here, and then from here it can start coming back up. So what we are seeing here right now is a correction of almost, I would say it touches $50,000, and if it goes back to $48,000, $42,000, then it's a very healthy correction that we are seeing. 7%, 8% correction is a good correction. From 50,000 to all the way to $42,000, it means that it's almost 15%, 16% correction. So it's a very healthy correction, and if that big correction happens, then we can expect that Bitcoin and the crypto market will bounce back very quickly. It will go very high. So that is everybody's expecting. Will it happen? Nobody knows. How far it will go down? Nobody knows. But we have to see these trends very carefully that are showing the downward trend. So that is the market update right now. That market can go further down, but do not panic. Do not panic. Sell your assets. Rather, hold them tight, because nobody knows when it start coming back and how fast it will start coming back, that you could miss all the gains if you are holding any crypto right now. So that is the thing that and another thing is that Cardano, just while I'm online doing this live transmission, the Cardano just went back to a very big resistance and to a very big support. It just broke down to 250. So it's right now it's 248. That's a big thing. That's a big signal. That's a big sign that the market is going down further. If that happens, then definitely, because recently we know that all this price action that we have seen in Cardano, because of that price action, Cardano led the way all the top here, and because of the Cardano, Bitcoin, Ethereum, everything, all the other coins
rallied along. So that's not a good sign if Cardano is going down that far further. So be careful. Be careful. Especially do not leverage trade also by shorting this out, because we never know how far it will go. This looks really bad. You see that the RSI goes how far goes up, and then it is coming down very hard and very fast, and um, like almost a slope. So it's already at 38, uh, and this is the range between 30 to 38 or below 30 is when anytime markets can come back and start coming back very quickly. It's just, it can be just a V-shaped recovery, just like right here when it happens. You see that as soon as it touches 38 or around this area mark, it start coming back again very fast. So it can happen again here. When it happens, nobody knows. So be careful. Do not leverage trade it. Do not short it. Do not sell your big Bitcoin, Ethereum, or Cardano. All the big holdings, just hold it tight. It will come back soon and very fast. Um, so before we go to our new coin today, I just like to tell you guys that yesterday we launched our Bitcoin Urdu Bitcoin Technical Analysis Academy, and the first lesson was to how to use these tools that I use while I'm charting, about Oryx index, Oryx platform, Oryx software, and it applies same with trading view as well. So it is mainly on in Urdu language. So for my Urdu language viewers, I'm going to switch back in Urdu now. सो मेरे उर्दू लैंग्वेज के व्यूअर्स जो हैं उनके लिए खुशी बात है, कल मैंने लॉन्च की है अपनी उर्दू बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस की एकेडमी। उसका पहला लेसन कल मैंने रिकॉर्ड कराया है, कल लाइव, और एक दो लेसन इस वीकेंड पे या अर्ली नेक्स्ट वीक भी रिकॉर्ड कराने का मेरा है। वीकली बेस पे एक एक लेसन उसमें आते रहेंगे। अभी वो फ्री है फ़िलहाल, आप मेरी वेबसाइट पे जाके या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लेसन 1 देख सकते हैं। उसका UBTAA के नाम से उसका लिंक है वहाँ पर, उस पेज पे वेबसाइट पे मेरी, और आप जो है उसको उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब सीख सकते हैं आप, ये जो मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं आप, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है किस तरह से। तो जिस तरह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, फिर आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप काफ़ी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया इंग्लिश में, आप लोगों को बताया कि जो जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं, तो मार्केट नीचे जा रही है, और इस ब्रेक डाउन को मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। जिस तरह RSI जो आपका रिलेटिव इंडेक्स है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जब ये इंडेक्स नीचे जा रहा हो, और जिस तरह से डाउन ट्रेंड में था और ये वेजेस ऊपर की तरफ थी, आप सब लोग समझ रहे थे कि ऊपर जा रहा है, यही टाइम होता है कि एकदम से फिर जो है ड्रॉप आता है, और जो कि आया है वो ड्रॉप। अब हम वेट करेंगे इसका RSI का, कि देखने का कि ये किस इस लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ। जैसे इसको ब्रेक करेगा, ये वापस मार्केट पर वी शेप रिकवरी लेंगे। अभी फर्दर डाउन जा सकती हैं, ऑलमोस्ट 42,000 तक जा सकती है मार्केट, विच इज़ ओके। इतना मतलब 42,000 या उससे ऊपर थोड़ा सा अगर ये जाके भी वापस बहुत तेज़ी से आएगी, फिर ये हेल्दी करेक्शन होगी। ऑलमोस्ट 50,000 से 42 या $43,000 तक इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन, जो कि अच्छी बात है। किसी भी एसेट किन्हीं का इतना करेक्ट करता है तो फिर बहुत तेज़ी से फिर वो बाउंस बैक भी करता है इतने कंसोलिडेशन के बाद। तो एक इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपने बिटकॉइन, इथेरियम या कार्डानो आपने बाय किए हैं तो उनको होल्ड करें, उनको सेल आउट इस वक्त करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं पता किस वक्त मार्केट ऊपर की तरफ आएगी और आप वो सारे गेंस जो है मिस कर देंगे फिर। तो इस वक्त जो है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि होल्ड करें और वेट करें। अगर कैश है आपके पास, साइड में आपने रखा हुआ है पहले ही, यहाँ पर जब मैं आपको बताता रहा हूँ आपने सेल कर दिया है इसको, और अब यहाँ नीचे आपके पास कैश हो, तो फिर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कि आप डिप को बाय कर सकें। ये एक आइडिया होता है कि जिस वक्त मैं आपको ये इंडिकेटर्स बता रहा था कि अब मार्केट नीचे जाएगी, फर्दर जाएगी नीचे, तो उसको जो है आप ख़ासतौर पर टॉप पे जब हों तो वहाँ से अपने कुछ प्रॉफिट सेव करने शुरू करें। मेरी पिछली तमाम पिछले एक हफ़्ते की जो लाइव ट्रांसमिशन है मेरी, उनको जाके उन रिकॉर्डिंग्स को देखें आप। सब में मैंने इवन थंबनेल्स पे लिखा हुआ है कि अपने सेव करें, अपने प्रॉफिट्स को सेव करें। ये पिछले एक हफ़्ते से पूरे में सब आपको रोज़ाना बता रहा हूँ। इस वक्त अब हम उसमें वी आर इन द मिडल ऑफ दैट करेक्शन, हम उस करेक्शन के बीच में हैं इस वक्त। तो अब कोई भी एक्शन जो होगा आपको नुकसान कर सकता है।
इस वक्त आपको सेल करना या बाय करना इस वक्त जो है वो बहुत नुकसान कर सकता है। तो अभी बिल्कुल साइड लाइन पे बैठ के ख़ास इस वक्त बिल्कुल एक्शन को नोट करें इसको कि मार्केट मज़ीद नीचे जा रही है या अब बाउंस बैक की तरफ आ रही है, और इनको RSIs को नोट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो उर्दू में मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपने के इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो लेसन आप देखें जाके, उन लेसन को सीखें आप। और अभी वो क्योंकि फ्री में हैं, फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे वो लेसन सारे, तो फिर उसको मैं मूव कर दूंगा पेड कंटेंट्स में सिर्फ। तो अभी आप ख़ास तौर पे शुरू के व्यूअर्स हैं मेरे उर्दू के, उनके लिए वो मैंने फ्री रखा हुआ है। तो आप उसको प्लीज़ उससे जाके जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ उसमें लेसन, उनको आप ये सारे टेक्निक से सीख लें ताकि ख़ुद भी आप ये सब कर सकें हर वक्त। क्योंकि मैं दिन में 1 या 2 स्ट्रीम कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट जो है 24/7 खुली हुई है इसकी, क्रिप्टो की बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो आपको ये ख़ुद भी आने चाहिए सारे टेक्निक से अगर आप इसमें पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त क्रिप्टो की जो मार्केट है और बहुत इनिशियल लेवल पर है। अभी जो इसमें घुस जाएंगे वो पैसा बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त। अब हम आ जाते हैं मार्केट्स को देखने के बाद, अब हम आ जाते हैं अपने मैंने प्राइस टारगेट्स बता दिया आपको कितना नीचे जा सकती है मार्केट सब। और मज़ीद कल जो है फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है कि सुबह ऑप्शंस और फीचर्स एक्सपायरी की ख़त्म होने के बाद जो कि $42,000 का उनका मैक्स पेन पॉइंट है, वहाँ तक होता है ले आने की कोशिश करेंगे कल सुबह तक। लेकिन उसके बाद फिर बहुत स्पीडी रिकवरी आएगी ओवर द वीकेंड और कल शाम के टाइम पे मोस्ट लाइकली। इस सेट असाइड करते हैं अब इसको, और आज का हम कॉइन देखते हैं अपना जो मैं लेके आया हूँ। पहले इंग्लिश में उस कॉइन को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर मैं उर्दू में वापस आऊँगा आप लोगों को बताने के लिए उसके बारे में। सो उसकी एक वीडियो है वो इंग्लिश में, लेट्स वॉच दैट वीडियो अबाउट दैट कॉइन in English. Coming up now for main shoes. The world is constantly changing. Civilization continues to reach new heights, and it's happening faster than ever. The world we knew 20 years ago is almost unrecognizable. Today, we are in the midst of the fourth industrial revolution, a new era in which the boundaries between the digital and the physical world are blurring. The rapidly growing utilization of new technologies has ushered in an era of global digital transformation. It is changing the way we work, the way we live, and the way we relate to one another. A revolution which is on its way to impact all disciplines, industries, and economics, shaping the future of our civilization. A future in which the amount of generated data will be growing exponentially. 90% of the data that exists in the world today has been created in just the last few years alone. It has become the new oil. New technologies designed for big data are therefore going to be vital, as the world's infrastructure is not prepared for this exponential growth rate. Until now, Constellation embraces this future and has built a technology crucial for what lies ahead. Not too long ago, the invention of distributed ledger technology opened the door to limitless new possibilities, such as the creation of trustless decentralized money, Bitcoin, as well as platforms for smart contracts and computation, Ethereum. However, these only scratch the surface of what is possible with DLT. Constellation Network, HYPERGRAPH, is the world's first DLT for big data. It's a directed acyclic graph, DAG, and the next evolution in DLT, which significantly expands upon the capabilities of blockchains. HYPERGRAPH is different to all other DAGs in that it scales horizontally, it scales infinitely, and it's designed to handle all of the world's data. There's absolutely no limit. Constellation's world-class engineers realized that the answers to the most unsolvable problems could be found by examining the design of nature itself. HYPERGRAPH is architected to mimic the design of nature, and through that, Constellation managed to solve true scalability, the greatest challenge in DLT. The decentralized open-source protocol, HYPERGRAPH Transfer Protocol, has set a new standard. A standard to securely use, transfer, manage, monetize, audit, and validate data at truly limitless scale.
Not only that, but like the internet, this technology is designed to work and connect with every device and with all data types, even the most complex data. With limitless new possibilities come limitless new threat vectors and risks. All of our personal data is harvested and sold, leaving us with nothing in return. Worse yet, most of the world's data is unsecured, a risk of becoming bad data, spoof data, or stolen data. This affects us all, every entity, from militaries, governments, and businesses to everyday people. The problems can be truly endless, and the cost and risks would be terrifying. By working very closely with the US DoD, federal government, major enterprises, academia, and blockchain companies, Constellation is ensuring mass adoption, providing the world's best data cybersecurity, preventing catastrophes, cutting costs, and enabling full control over data. As for all of our data that gets harvested and sold, Constellation has the perfect solution. Constellation is enabling users through a very user-friendly wallet to finally be able to control all of their data in one hub and sell it to whomever they please. We call these users DATAPRENEURS, and they are the pioneers of the new data economy and of a new source of income. So as we look forward to what lies ahead, we can assure you, Constellation is here to serve all our data needs worldwide, now and in the future. All right. So yes, this is the project Constellation Network that I was talking about to introduce you guys today. This is a very robust open source platform that is used to create blockchain, cryptocurrency, and decentralized applications. So it is a total network, total platform that provides that functionality, and it is enough to back this project. That who are the partners? One of the partner of this project is US Air Force. So that is enough already to back this project, that how far that project can go and how big that become. Now look at the price of this coin right now. It is sitting at 41 cent, 42 cent almost. So its all-time high was not too long ago. It is there. This project is in works from September 2018. So it's not something new, but just recently it is start coming up. So and it start coming up big time. You can see this. So it is on the price discovery right now. It is still very small cap. You can see that total volume is $27 million only, and the market cap is 567 million right now, and 10% up just now, and its total market supply, circulating supply, is 1.2 billion. So it is a lot of supply, circulating supply, but maximum total supply is 3 billion, 3.7, almost 4 billion market supply. So already, I would say fourth of this market total supply is already in circulation. So that is the project that I would like to introduce you. It has a really good potential. It's still in. It's just becoming in a limelight, especially when its partnerships grows, and it has a real potential to go really high. With very small investment, just 42 cent a coin, you can make good money. Just recently, you can see that it's coming up really nice, 11%, 6%, 7% up, while the market is going down. That's why against BTC is 11% and ETH is 11% up, because they are going down while the coin is still going up. So it's a very good long-term hold, I would say. It is available on KuCoin, I guess.
Yeah, so it is available on KuCoin where you can buy this easily. I would I'm not your financial advisor, so I cannot tell you to go ahead and buy it. But as far as the information, as well as the look of this project is concerned, is really promising. That's it for the English viewers for today. I hope you will make good money, good gains out of this project that I just introduced. तो मेरे उर्दू नाज़रीन के लिए, जो उर्दू लैंग्वेज देख रहे हैं, उनके लिए ये कॉइन है कॉन्स्टलेशन, जिसके टिकर सिंबल जो है वो DAG है, और KuCoin पे अवेलेबल है। ये इज़ ऑफ 42 सेंट के अराउंड चल रहा है, और अभी रिसेंटली ऊपर आना शुरू हुआ है। उसकी वजह इसकी पार्टनरशिप्स हैं। मैंने आपको बताया कि उसमें से एक बड़ी पार्टनरशिप जो है US एयरफोर्स की है। ये पूरा नेटवर्क है जो कि प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये पूरा नेटवर्क है, ये खाली ब्लॉकचेन नहीं है बल्कि पूरा नेटवर्क है, जस्ट लाइक बाइनेंस। जैसे कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, उसमें ब्लॉकचेन भी शामिल है, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, तमाम चीज़ें उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं उस नेटवर्क में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रोबस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, और इसके पीछे जो है साल की मेहनत है, काम है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है, 2018 से ये प्रोजेक्ट जो है वर्क्स में है, चल रहा है। इसको अब रिसेंटली पजीराई इसलिए मिल रही है क्योंकि इसकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी, और ख़ास तौर पे US एयरफोर्स के साथ मिलके और फेडरल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी उनके रडार में आ चुके हैं। तो जब इस किस्म का इकोसिस्टम हो, इस किस्म का जो है पार्टनरशिप्स हो आपकी, तो आप देख सकते हैं KuCoin के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा इसको देना चाहिए कि इसको बैकिंग हासिल है बड़े बड़े नाम की। अमेज़ॉन भी शामिल है इसमें। तो ये आपको कुछ बताएगी ये चीज़ कि अमेज़ॉन जो हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्दी वो क्रिप्टो में दाखिल हो सकते हैं, तो वो इकोसिस्टम में इसके अमेज़ॉन का नाम भी शामिल है। तो जस्ट लुक एट इट। तो ये इतनी बड़ी पार्टनरशिप्स, इतनी बड़ी चेन लिंक इनका ऑरेकल, ये देखिए आप। तो इतने बड़े बड़े नाम जब जिस कॉइन के साथ, जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हों, तो उसमें डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक अक्लमंदी का फ़ैसला होगा इस वक्त। और जितनी जल्दी हम घुसेंगे, जितने जल्दी हम इसका हिस्सा बनेंगे, उतने ज़्यादा गेंस जो हैं आगे फ्यूचर में हमें तवक्को हो सकती है उसकी। कि तो ये आज का कॉइन था जो कि मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराना था। आई होप कि इस कॉइन में मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता आपको, लेकिन हर एक इंसान की क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्ट के लुक्स एंड फील हैं, और जो उसके पार्टनरशिप्स हैं, और जो उसके इकोसिस्टम है, वो देख के लग रहा है कि बहुत कामयाब होगा। बहुत जल्दी लोग जो हैं इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। हम लोग उनमें से जो अभी शुरू में इसको बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी बहुत भी, तो उसमें ज़्यादा बड़े गेंस के हमें चांसेस हैं, तवक्को है। आज के लिए इतना ही बस। कल फ्राइडे है, कल मोस्ट लाइकली जब हम बात करेंगे इस वक्त या इससे थोड़ा पहले हो सकता है मैं करूँ, या अराउंड सेम टाइम, जल्दी भी आ सकता हूँ मैं थोड़ा कल, अपनी जो रेगुलर जो रोज़ाना की ट्रांसमिशन होती है उसके लिए, मार्केट्स के ऊपर नज़र डालने के लिए। और हो सकता है कि एक नया लेसन का और इजाफा करूँ आपके लिए, जो हमारी एकेडमी है उर्दू बिटकॉइन की, जो आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे सिर्फ उर्दू में उसमें कंटेंट्स हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं जो लोग, वो urduBitcoin.com पे आके UBTAA का ये लिंक है। यहाँ पर ये इस एकेडमी का पहला लेसन ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसको क्लिक करके आप उसको जो है को आप उसमें सीख सकते हैं। वो ऑरेक्स या ट्रेडिंग व्यू दोनों सेम उसके टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे थ्रू आउट द लेसन, थ्रू आउट, और पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। ख़ास तौर पे ट्रेडिंग व्यू को तो पेड है, वो ऑरेक्स जो है वो फ्री है। तो आप उसको इस लेसन में तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर कि उससे क्या क्या टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, और आगे हम अपने लेसन में करेंगे उन टूल्स को यूज़ मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस में। तो मोस्ट लाइकली कल एक और लेसन का इजाफा होगा इसमें, और आप लोग जो हैं इसको ज़रूर सीखें और देखें। न्यूज़ को ख़ास जो हैं वो अच्छी न्यूज़ ही हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो
कि मेजर होटल जो है उसका ये जो है नाउ अलाइन क्रिप्टो पेमेंट्स। तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ तो सारी बुलिश हैं, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट नीचे है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है, करेक्शन फेज़ में है। तो उसका आपको पहले से मैं आपको बताता रहा हूँ, आपको आगाह करता रहा हूँ कि किस तरीके से RSIs जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट भी करेक्शन में जा सकती है। यही वजह है कि हम मार्केट्स को जो है करेक्शन में इस वक्त देख रहे हैं, और किसी वक्त भी मार्केट्स जो हैं वो अब ऊपर की तरफ आज रात में या कल सुबह में आ सकती हैं। तो अपने बिल्कुल भी पैनिक सेल करने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा पैगाम है आपको कि बिल्कुल भी पैनिक सेल ना करें, होल्ड करके रखें। जबकि डिप्स आएँ तो उसको वेलकम करें, वो तो डिप्स अच्छी चीज़ है कि आप उसको उस वक्त सस्ते में कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया हो चांस कार्डानो का, तो कार्डानो जो है दोबारा से $2.48 का आ गया। इमेजिन दैट कि कितनी तेज़ी से $3 का चला गया था, और ऊपर ही ऊपर और जाएगा, या फिर दोबारा $3 से भी ऊपर जाएगा। तो हमें पता है इथीरियम बहुत स्पीड से ब्लो अप करने वाला है, काफ़ी अरसे से इसी रेंज में फंसा हुआ है, वो 3000 से लेके और 3300 की रेंज में फंसा हुआ है। बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी के साथ अब ड्यू हो चुका है इथीरियम का ब्लो अप टॉप करना। ये करेगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा बहुत तेज़ी से। तो होल्ड ऑन टू योर कार्डानो, होल्ड ऑन टू योर इथीरियम, होल्ड ऑन टू योर बिटकॉइन, इनको होल्ड करके रखें। बिल्कुल भी पैनिक सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर कल। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।